Hello everyone, my name is Dr. Pooja Tiwari. I am an endocrinologist. Welcome to When to Consult an Endocrinologist section. एक डिजीज़ कंडीशन है जिसका नाम है अड्रीनल इंसफिशियंसी. मैं केस सिनारियो के बारे में आपको बताती हूँ. एक पेशेंट अराउंड 55 ईयर्स ओल्ड ही प्रेजेंटेड, उनका कंप्लेन था पिछले 6-7 साल से वो नोटिस कर रहे थे स्किन डार्कनिंग, मतलब उनका स्किन नॉर्मल से डार्क हुआ जा रहा था. उनको भूख नहीं लग रही थी, एपेटाइट उनका अच्छा नहीं हो रहा था एंड उनको अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस एंड फटीग रहती थी हमेशा. ये कंडीशन ग्रेजुअली उनकी प्रोग्रेस कर रही थी एंड मीनवाइल उन्होंने कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया इन व्यू ऑफ द डार्कनिंग ऑफ स्किन and he was being given some ointments and some lightening creams. In between he also consulted some physicians in view of weakness, generalized weakness, and again he was being managed with some calcium, multivitamins. एंड ये कंडीशन उनकी ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती रही एंड ही कंसल्टेड मेनी प्लेसेस बट ही वॉज नॉट बीइंग मैनेज्ड प्रॉपरली. One day his weakness progressed and he just collapsed. He was rushed to hospital. There he was found to have a very low sodium. He was being managed conservatively and later an endocrinologist opinion was sought and he was found to have a cortisol hormone deficiency, which is what this disease entitles adrenal insufficiency. Now he is being managed with the hormone, cortisol hormone is being replaced and he is doing very much fine for now. इट वॉज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू ट्रीट बट क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन एक टाइमली टू द कंसर्न्ड पर्सन नहीं हो पाया, इस वजह से ये डिजीज़ इतना टाइम तक प्रोग्रेस करता रहा. The importance of this is whenever somebody is having these symptoms like loss of appetite, generalized weakness, fatigue, unexplained dizziness, not feeling well, and the change in the skin color. This can be darkening or can be excess fairness also. Both presentations can be. But whenever somebody is having these kind of symptoms, just give a try and consult an endocrinologist. Thank you.